present here and the ones who have joined us virtually. I, Soumya Shukla, on behalf of the Embassy of India, The Hague, Netherlands, welcome you to the 73rd Republic Day of India. I request you all to kindly be ready as the Ambassador of India, His Excellency Shri Pradeep Kumar Rawatji, hosts the national flag, followed by the national anthem, and addresses us with the speech of the Honorable President of India. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे गावे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर देश और विदेश में रहने वाले आप सभी भारत के लोगों को मेरी हार्दिक बधाई। हम सबको एक सूत्र में बांधने वाली भारतीयता के गौरव का यह उत्सव है। सन 1950 में आज ही के दिन हम सभी की इस गौरवशाली पहचान को औपचारिक स्वरूप प्राप्त हुआ था। उस दिन भारत विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ और हम भारत के लोगों ने एक ऐसा संविधान लागू किया जो हमारी सामूहिक चेतना का जीवंत दस्तावेज है। हमारे विविधतापूर्ण और सफल लोकतंत्र की सराहना पूरी दुनिया में की जाती है। हर साल गणतंत्र दिवस के दिन हम अपने गतिशील लोकतंत्र तथा राष्ट्रीय एकता की भावना का उत्सव मनाते हैं। गणतंत्र दिवस का यह दिन उन महानायकों को याद करने का अवसर भी है जिन्होंने स्वराज के सपने को साकार करने के लिए अतुलनीय साहस का परिचय दिया तथा उसके लिए देशवासियों में संघर्ष करने का उत्साह जगाया। 3 दिन पहले 23 जनवरी को हम सभी देशवासियों ने जय हिंद का उद्घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनका पुण्य स्मरण किया है। स्वाधीनता के लिए उनकी ललक और भारत को गौरवशाली बनाने की उनकी महत्वाकांक्षा हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। We are immensely fortunate that the Constituent Assembly, which prepared the document, included some of the best minds of their generation. They were the leading lights of our great freedom struggle. After long years, the soul of India was reawakening, and these exceptional men and women were the harbingers of a new dawn. Dr. Baba Saheb Ambedkar, who as chairman of the drafting committee prepared the final version that has become our founding document. The preamble sums up its guiding principles: democracy, justice, liberty, equality, and fraternity. They form the bedrock on which our republic stands. These are the values that form our collective inheritance. These values have been accorded primacy in our constitution in the form of fundamental rights and fundamental duties of the citizens. Rights and duties are two sides of the same coin. By fulfilling the fundamental duty of rendering national service when called upon to do so, crores of our people have transformed the Swachh Bharat Abhiyan and the COVID vaccination drive into mass movement. I am sure
that our people will continue to strengthen the campaigns of national interest with their active participation and will demonstrate the same dedication. The Constitution of India was enacted and adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949, which we now celebrate as Constitution Day. But it was made effective 2 months later. This was done to mark that day in 1930 when India resolved to win complete freedom. From 1930 to 1947, every year, 26 January was celebrated as पूर्ण स्वराज डे। सन 1930 में महात्मा गांधी ने देशवासियों को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का तरीका समझाया था। उन्होंने कहा था, चूंकि हम अपने ध्येय को अहिंसात्मक और सच्चे उपायों से ही प्राप्त करना चाहते हैं और यह काम हम केवल आत्मशुद्धि के द्वारा ही कर सकते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि उस दिन हम अपना सारा समय यथाशक्ति कोई रचनात्मक कार्य करने में बिताएं। गांधी जी चाहते थे कि हम अपने भीतर झांक कर देखें, आत्मनिरीक्षण करें और बेहतर इंसान बनने का प्रयास करें और उसके बाद बाहर भी देखें, लोगों के साथ सहयोग करें और एक बेहतर भारत तथा बेहतर विश्व के निर्माण में अपना योगदान करें। The world has never been in so much need of help as now. It has been over 2 years now and humankind is still battling with the coronavirus. Hundreds of thousands of lives have been lost and the world economy has been reeling under the impact. It has been an extraordinary challenge to humankind. The pandemic management was bound to be all the more difficult in India, but it is only in such difficult times that the resilience of a nation shines forth. I am proud to say that we have shown an unmatched resolve against the coronavirus. During the pandemic, we have reached out to several other countries with vaccine and other medical help. A time of crisis has also made us appreciate how we all Indians are connected as one family. We have realized how much we depend on each other. Doctors, nurses and paramedics have risen to the challenge, working long hours in difficult conditions, even at the risk of their life to attend to patients. Others have kept the nation moving, managing supply chains and utilities. It is a testimony to India's spirit in the face of adversity that the economy is projected to grow at an impressive rate in this fiscal. This shows the success of Atmanirbhar Bharat Abhiyan. The impressive economic performance is made possible due to improvement in the agriculture and manufacturing sectors. I am happy to note that our farmers, especially young farmers with small land holding, are enthusiastically adopting natural farming. लोगों को रोजगार देने तथा अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में छोटे और मझोले उद्यमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे इनोवेटिव युवा उद्यमी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम का प्रभावी उपयोग करते हुए सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हमारे देश में विकसित, विशाल और सुरक्षित डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म की सफलता का एक उदाहरण यह है कि हर महीने करोड़ों की संख्या में डिजिटल ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि विश्व में सबसे ऊपर की 50 इनोवेटिव इकोनॉमीज में भारत अपना स्थान बना चुका है। यह उपलब्धि और भी संतोषजनक है कि हम व्यापक समावेश पर जोर देने के साथ साथ योग्यता को बढ़ावा देने में सक्षम हैं। In the past year, our sportsperson also brought cheers as they made their mark at Olympics. The self-confidence of these young champions inspires millions today. The dedicated teams of the Indian Navy and Cochin Shipyard Limited have built an indigenous state-of-the-art aircraft carrier IAC Vikrant, which is to be inducted into our Navy. Due to such modern military capabilities, India is now counted among the world's leading naval powers. In a village called Sui in Bhiwani district of Haryana, some enlightened citizens who belong to that village had transformed the village under the Swa Prerit Adarsh Gram Yojana, demonstrating sensitivity and diligence. This example strengthens my belief that a new India is emerging, a strong India and a sensitive India.
In this context, I would like to share a personal experience with all of you. I had the privilege of visiting my birthplace, that is my village, Parong at Kanpur Dehat district in the month of June last year. On reaching there, I naturally felt the urge to express respect for the sacred soil of my village and applied it on my forehead because I believe that I have been able to reach Rashtrapati Bhavan only due to the blessings of my village. Wherever in the world I may be, my village and my country remain in my heart. I request the people of India who are successful in life due to their hard work and talent to always remember their roots, their village, town or city. Also, all of you must serve your place of birth and your country in whatever way you can. If all the successful people of India work sincerely for the development of their birthplaces, then the whole country will benefit from the outcome of such local development. देश प्रेम की भावना देशवासियों की कर्तव्य निष्ठा को और मजबूत बनाती है। अपने कर्तव्य का निर्वहन निष्ठा व कुशलता से करना देश के लिए आपका प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में मुझे यह उल्लेख करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यह वर्ष सशस्त्र बलों में महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण हो रहा है। हमारी बेटियों ने परंपरागत सीमाओं को पार किया है। मुझे विश्वास है कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत आज बेहतर स्थिति में है। भारत ने अक्षय ऊर्जा के लिए अपने साहसिक और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ विश्व मंच पर नेतृत्व की स्थिति बनाई है। भारत ने सदैव समस्त विश्व को एक परिवार ही समझा है। मुझे विश्वास है कि विश्व बंधुत्व की इसी भावना के साथ हमारा देश और समस्त विश्व समुदाय और भी अधिक समरस और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ेंगे। This year, India will cross a milestone when it completes 75 years of independence. We are celebrating this occasion as Azadi Ka Amrit Mahotsav. It is a great opportunity for not only the next generation but all of us to reconnect with our past. Our freedom struggle was an inspiring chapter in our splendid saga. In this 75th year of independence, let us rediscover the values that animated our glorious national movement. Many men and women laid down their lives for our freedom. Let us gratefully recall their immortal sacrifices on the occasion of Republic Day. India is an ancient civilization but a young republic. For us, nation building is a constant endeavor. When we won independence, the exploitation of colonial rule had left us in utter poverty. But in 75 years, we have made impressive progress. New opportunities await the next generation. Our youth have taken advantage of these opportunities and set new benchmarks of success. I am sure that with this energy, confidence and entrepreneurship, a country will continue to march ahead on the path of progress and will definitely secure its rightful place befitting its potential in the global community. मैं आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। As part of the celebrations of the 73rd Republic Day of India, the Embassy of India, Netherlands brings to you an amalgamation of cultural performances under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav. India is a land of innumerable colors when it comes to art, culture, food, languages, clothing and much more. And yet, through these valuable diversities, India is united with the love for the motherland. Today, we bring to you a symbol of this unity in diversity
through our cultural performances. Our first presentation is a series of soul-touching songs of our nation, India. Our vocalists, Mrs. Shashwati and Mr. Hari, accompanied by Mr. Sandeep Bhattacharya on the tabla, will bring this presentation for us. Shashwati Jagdish, a Carnatic musician from Chennai, is the disciple of Shri A.S. Murali. She has performed Carnatic concerts all around the world, as well as has given background vocals for movies, working with music directors such as A.R. Rahman and many more. In Netherlands, she runs her own music school. Hari Krishnan is trained in Carnatic music by Guru Shri Chandaraman Narayan Nambudri and late Shri Bellary Venkatesh Achar. He has given numerous performances in India, Netherlands, Germany, Italy and world over, and he is a recipient of various awards as well as has musical albums to his name. Presenting to you vocal music by Shashwati and Hari, accompanied by Shri Sandeep Bhattacharya ji. Namaste. A very happy Republic Day to everyone. Today we will be performing a few songs on patriotism and peace. The first song is composed by Shri Subramanya Bharati, who was a great Tamil poet who also composed poems about the Indian independence struggle. So today we thought it will be apt to start a song with Shri Subramanya Bharati's composition.
நர சூரியரும் சொல்லும் வீரிய வாசகம் ஆரிய பூமியில் நாரியரும் நர சூரியரும் சொல்லும் வீரிய வாசகம் வந்தே மாதரம் ஜய ஜய வந்தே மாதரம் நொந்தே போயினும் வெந்தே மாயினோ நொந்தே போயினும் வெந்தே மாயினும் நந்தே சத்தர் உவல்தே சொல்வது நொந்தே போயினும் வெந்தே மாயினும் நந்தே சத்தர் உவல்தே சொல்வது வந்தே மாதரம் ஜய ஜய வந்தே மாதரம் ஒன்றாய் நின்றினி வென்றாயிரோமோயே சென்றாயிரும் வலி குன்றாதோதுவம் ஒன்றாய் நின்றினி வென்றாயிரோமோயே சென்றாயிரும் வலி குன்றாதோதுவம் வந்தே மாதரம் ஜய ஜய வந்தே மாதரம் ஜய ஜய வந்தே மாதரம் ஜய 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 வந்தே மாதரம் 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 ஜய ஜய வந்தே மாதரம். Next, we would like to present a very popular patriotic song which was composed by Padma Shri Vinay Chandra Maudugalya. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है बेला गुलाब जूही चंपा चमेली बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यार प्यार फूल गूंदे माला में एक है प्यारे प्यारे फूल गूंदे माला में एक है हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे
यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। The last song that we will be performing today is Maitrim Bhajata. It's a Sanskrit composition composed by Sri Chandrasekhara Saraswati, the Paramacharya of Kanchi. The song talks about how righteously we should live our lives. मैत्रीं भजत अखिलः जेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलः जेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलः जेत्रीं। आत्मवदेव परानपि पश्यत, आत्मवदेव परानपि पश्यत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्, त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्। मैत्रीं भजत अखिलः जेत्रीम्। जननी पृथ्वी कामदुःखास्ते, जननी पृथ्वी कामदुःखास्ते, जनको देवः सकल दयाळु, जनको देवः सकल दयाळु। गाम्यत दत्त दयत्वं जनत, गाम्यत दत्त दयत्वं जनत, श्रेयो भूयात् सकल जनानां, श्रेयो भूयात् सकल जनानां, श्रेयो भूयात् सकल जनानां, श्रेयो भूयात् सकल जनानां, श्रेयो भूयात् सकल Thank you so much, Shashwati and Hari, for this soulful singing. Thank you. Next, we have a performance of Kathak dance, which is an Indian classical dance form from the northern part of India. Kathak is the storytelling dance form which depicts various stories and evidences of deep-rooted sensitive practices in India. The following performance is of one such tradition, the Guru-Shishya Parampara, or the student-teacher relationship, where a guru or a teacher is prayed to with the shloka Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara. We present to you Guru Vandana, which is performed by Miss Noah Ninberg. She is a student of Kathak at the Gandhi Center, The Hague, and has also been trained with Mrs. Kajal Roy Mishra in Kolkata and Mr. Indranil. Presenting to you Guru Vandana by Noah Ninberg.
We hope you liked the Kathak performance by Noah. We now present a percussion performance on the tabla by Mr. Sandeep Bhattacharya ji, who will take us through a journey filled with rhythms of different kinds. Sandeep Bhattacharya ji is one of the finest tabla players in Indian classical music and has attained a very special place for himself as a deep musician, composer and multi-instrumentalist among the musicians and music lovers around the world. He is trained in pure Banaras style under Pandit Ishwar Lal Mishra as well as in other styles by Pandit Arvind Mulganokar of Mumbai. He has been teaching in Netherlands and different parts of Europe, USA, Canada, Japan and in India. Sandeep ji has performed several times for the Queen and Royal Family of Netherlands amongst his numerous performances. Sandeep ji also conducts regular tabla classes at the Gandhi Center in The Hague. Presenting to you a tabla performance by Shri Sandeep Bhattacharya ji. Namaskar to everyone. Happy Republic Day. We all are celebrating this beautiful day together. I am thankful to Gandhi Center for inviting me. I am going to play tabla solo, a short tabla solo like 10 minutes in teen tal, 16 beats rhythm cycle. I will be playing compositions like a Uthan, Peshkar, and then later some Qaida, Baat and Rela. Towards the end I will play some composition like Tukda, Chakradar, Gat. So tabla solo in teen tal.
मैं एक बनारस का बहुत ही खूबसूरत बाँट धिक धिन्ना त्रिक धिन्ना बजा रहा हूँ। ये ट्रेडिशनल बाँट है बनारस का। धिग धिन्ना तेरकट धिन्ना धागे न धिग तिनाड़ा तिक तिन्ना तेरकट धिन्ना धागे न धिग धिना धिग धिन्ना त्रिकट धिन्ना धागे न धिग तिनाड़ा तिक तिन्ना त्रिकट धिन्ना धागे न धिग धिनाड़ा। कुछ चलन बनारस के खास। द्रुत लय में कुछ कंपोजिशन। तागते टेक्काता घेना धा तिन्ना घेना तिन्ना धा तिन्ना धा तिन्ना धा तिन्ना कत घेना तिन्ना धा तिन्ना धा तिन्ना धा तिन्ना घेना तिन्ना धा तिन्ना धा तिन्ना धा तिन्ना।
धदगृतक तगड़ा धदगृतक तगड़ा धदगृतक तगड़ा 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 का धदगृतक तगड़ा का धदगृतक तगड़ा का धदगृतक तगड़ा. धदगृता कतगगतिन नागधर तटघंतलानदातिन कतेटे धदगृता गिरदा धदगृता गिरदा धदगृता. Thank you, Sandeep ji. Ladies and gentlemen, we hope you enjoyed this presentation. Our finale performance is a thoughtful collaboration of 3 art forms in India: Kathak, Carnatic vocal music, and tabla. We bring to you 2 different emotions of patriotism, one through the national song Vande Mataram, an appreciation for our motherland India, and it bows down in gratitude for all that she has to offer us and to the world. And the second song, Sarfaroshi ki tamanna ab hamare dil mein hai, represents the strong feeling of ultimate sacrifice which we are ready to make for the safekeeping of the sovereignty, secularity and democracy of the nation. This will be performed in pure Kathak dance style by me, Soumya Shukla, in collaboration with Mr. Sandeep Bhattacharya ji on the tabla, Mrs. Shashwati and Mr. Hari giving the vocals. I have been trained by Guru Nritya Alaknanda at the Alaknanda Institute for Performing Arts in Noida and have been an ICCR appointed Kathak teacher and performer in Budapest, Hungary, as well as currently teaching at the Gandhi Center in The Hague. So we present to you a beautiful collaboration presenting the Vande Mataram and Sarfaroshi ki tamanna ab hamare dil mein hai. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Sujala Sufalam Malayaj Sheetalam Sasya Shamalam Mataram Vande Mataram Vande Mataram Sujala Sufalam Malayaj Sheetalam Sasya Shamalam Mataram Vande Mataram Vande Mataram. Shubhra Jyotsna Pulakitaya
दया मिली कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् खुशबू बन के महका करेंगे हम लहलहाती हर फसलों में सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में खुशबू बन के महका करेंगे हम लहलहाती हर फसलों में सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में आने वाली नस्लों में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है We hope that you have enjoyed watching the cultural performances which have been the part of the celebration of the 73rd Republic Day celebration here at the Embassy of India, Netherlands. Azadi Ka Amrit Mahotsav, the celebration of India, was brought to you by the artists at the Embassy of India, Netherlands. We wish all the Indians, those living in Netherlands and around the world, a happy Republic Day, and we hope that no matter where you are, you carry a piece of India within you. Jai Hind.